All right, thank you so much, Samba, for all those details on that story. We are shifting focus now. After 9 years of legal proceedings, the court has pronounced a sentence of life imprisonment and fines on 5 perpetrators of the heinous Bulandshahr gang rape. The verdict has been hailed as a step towards justice for the survivors who have endured immense trauma and relocation multiple times in the intervening years. The case underscores serious concerns about highway safety and police responsiveness at the time. Remember, a family of 6 was travelling by car from Noida to Shahjahanpur in Uttar Pradesh when their vehicle was ambushed on National Highway 91 near Dostpur village in Bulandshahr district. A gang of armed robbers threw an iron object at the car to force it to stop, then held the family at gunpoint. They tied up the male members of the family, isolated the 2 women including a 14-year-old girl, and raped them. Now, the Additional District Government Counsel Varun Kaushik has spoken on the issue. Let's in fact listen in. मुलजिमों को माननीय न्यायालय ने जिन सेक्शंस में गिल्टी होल्ड किया था उन्हीं धाराओं में आज माननीय न्यायालय ने सभी 5 मुलजिम्स को इसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और कोर्ट ने सजा सुनाते हुए ये संदेश भी दिया है समाज को कि इन जैसे दुर्दांत अपराधियों को सभ्य समाज से दूर रखना चाहिए. दे शुड ऑलवेज रिमेन बिहाइंड द बार्स. क्या पूरा मामला हुआ था सर? जरा ये हम सभी जानते हैं, बहुत हाईलाइटेड मैटर था. वर्ष 2016 में ये कुख्यात अपराधियों द्वारा बलात्कार और लूट की घटना थी जो दोस्तपुर हाईवे पे हुई थी. 2016 में एक पीड़ित परिवार एक जमी में शामिल होने के लिए गाजियाबाद से शाहजहांपुर जा रहा था. जैसे ही ये दोस्तपुर के पास पहुंचे हैं रात में 1:30 बजे उनकी गाड़ी पर किसी ने कुछ फेंका है. उसके बाद जैसे ही गाड़ी चेक करने के लिए पीड़िता के पिता गाड़ी से उतरे तो उनको 5 से 7 लोगों ने गन पॉइंट पर ले लिया और सबको ले जाकर सबके साथ मारपीट की है और पीड़िता और उसकी माता के साथ बलात्कार किया गया है. और सबसे अहम जो इसमें सबूत रहा था वो ये था कि पीड़िता की माता के पेटीकोट पर एक मुलजिम का डीएनए मैच किया था. सर, इसमें कुल कितने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट आई थी और किनको सजा हुई? इसमें कुल 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट आई थी जिसमें से एक मुलजिम सलीम की डेथ वो ड्यूरिंग ट्रायल जेल में हो गई थी वर्ष 2019 में और बाकियों के खिलाफ ट्रायल चला था जिनको सभी को माननीय न्यायालय ने दोष सिद्ध करते हुए आज उसमें आजीवन कारावास. All right, so we can see that after nearly a decade there has been an announcement in this case and the lower court has now given this verdict. All the 5 convicts in the Bulandshahr and National Highway 91 gang rape case have been sentenced to life imprisonment. In fact, let's take a look at the sequence of events that took place on that tragic day. Almost 9 years ago, because it's been a decade since the justice has now been served to those victims over here. So, the Bulandshahr gang rape case, on the night of July 29, 2016, a family of 6 was travelling by car from Noida to Shahjahanpur in UP. So, they were on the national highway. They were travelling from Noida to Shahjahanpur. Their car was then stopped on the National Highway 91 near Bulandshahr as a gang threw an iron object at the car. So, while the car was moving on the highway, the gang of robbers, armed robbers, actually threw an iron object towards the car to make it halt. Then the gang of armed robbers held the family at gunpoint, tied up the male members and robbed them. So, the armed robbers actually tied up the male members and robbed them as well. The accused then dragged a woman and her 14-year-old minor daughter to a nearby field. After tying up the male members, they actually dragged the women members towards the fields and they gang raped both the victims while the family begged for mercy. So, there was a mother involved, a minor as well in this entire horrific incident. The crime occurred just 5 kilometers from the Bulandshahr district headquarters and 2 kilometers from a local police station, but no patrol or response detected it. So, you can see how it raised questions of police patrol, how it raised questions of administration in this entire area, because this was just 5 kilometers from the district headquarters.
and the survivors reached the police and filed a complaint at the Kotwali Dehat police station. So the survivors themselves in fact went to the police station and filed that case. The case was transferred to the CBI on Allahabad High Court orders due to public outrage. Obviously, there was a lot of public outrage on this case, and then it was transferred to the CBI. 2 accused were killed in police encounters, 1 died in custody, and 3 were cleared by the CBI. So we have some of those details of the case that has been coming in. Now, a special POSCO court in Bulandshahr convicted the 5 surviving accused, Zubair, Sajid, Dharamveer, Naresh and Sunil Kumar. So this special court actually convicted all these 5 accused in the case. The court sentenced them to life imprisonment and fines on December 22nd, 2025. Joining us on the broadcast is my colleague Puneet Sharma. So Puneet, in fact, tell us about the details of the case. ये इतने दिनों बाद 9 साल के बाद ये पूरी केस हमारे सामने अब फाइनली उनको ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ये दिया गया है, तो इसके बारे में हमें ज़रा बताएं। बिल्कुल, देखिए शिवानी, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो ये 2016 का मामला था और ये देश में बहुत चर्चित कांड था। NH 91 पर ये गैंगरेप हुआ। सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें माँ बेटी के साथ में रेप हुआ था और लोगों ने गैंगरेप की पंजाब दिया था लगभग 9 साल के बाद में आज ये फैसला आया। और फैसले में ये जो पोस्को एक्ट में जो यहाँ न्यायाधीश हैं उन्होंने ये फैसला सुनाया कि 5 आरोपियों को आजीवन कारावास दिया जाता है और साथ ही 1,81,000 रुपए प्रत्येक आरोपी पर अर्थदंड भी दिया गया है। और ये बताया गया है इस पूरे मामले को लेकर के ये बड़ा जघन्य अपराध इन्होंने किया था और क्योंकि इसमें ये हाईकोर्ट के द्वारा CBI के इस केस को हैंडल कर दिया था। CBI इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और इसमें अदालत में कुल 6 लोगों के खिलाफ में चार्जशीट आई थी, जिसमें एक आरोपी की जो है वो सुनवाई के दौरान में जेल में मौत हो गई थी और इसमें अब कुल 5 आरोपी बचे थे और 5 आरोपियों को आज कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मैंने पहले भी बताया था कि 1,81,000 रुपए प्रत्येक आरोपी पर जो है वो अर्थदंड दिया गया है। जी पुनीत, और जब हम ये देख रहे हैं पूरा जो ये केस है, 9 साल गुजर गए, एक कन्विक्ट कस्टडी में मर गए थे और अब हमको जो 5 बचे थे उनको अब फाइनली जाके सज़ा मिल रही है। परिवार वाले अभी तक सह रहे थे, बहुत दिनों तक उन्हें मल्टीपल रीलोकेशंस भी करनी पड़ी थी इस पूरी केस की वजह से। पुनीत, बिल्कुल, हाँ देखिए सही कहा आपने कि काफी समय जो है गुजर गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के पहले हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में फिर CBI की जांच के ऑर्डर हुए और उसमें फिर CBI ने अपने ऊपर इस पूरे मामले को ले लिया था और उसके बाद में CBI ने इस पूरे केस को पुनः रीओपन करा, जांच की, जिसमें ये पाया गया कि जो है ये आरोपी जो इसमें पुनीत हमारे साथ बने रहे। इनफैक्ट हमारे साथ also joining us on the broadcast is Brinda Adige, women's rights activist. Thank you so much, ma'am, for joining us on the broadcast. Appreciate your time. Ma'am, finally after 9 long years, we see some kind of action. All the 5 accused have been convicted to life imprisonment. They do not, the court has decided that they do not deserve to stay in the society anymore. They need to be behind bars. I think that is an excellent verdict and judgment, but it is sad that in cases like this, even though there is a law that it has to be fast-tracked, it has taken 9 years. And that responsibility and accountability is placed on the judiciary. There is no need for the judiciary to prolong these kind of cases for 9 years. Getting the life term also means that they must not get parole on anything so flimsy called good behavior, because this good behavior is being taken advantage of, and the life that they have destroyed, the heinous crime that they have committed, that does not go away. It remains, it sears the entire soul of that survivor. So these people cannot be let out. I'm so glad the court has given them life term. I do hope that they
get rigorous imprisonment inside, and they have rigorous work that they have to do. But all said and done, I think we have nothing more to say or give to the survivors who went through this ordeal, this brutality, and the entire trauma. Any amount of counseling, any amount of support All right, will not ma'am, be able we to are cutting across to